Jai Hind students, welcome to online class of Shriram Public School. Myself Shweta Srivastava, your maths teacher. In the previous class, I was explained question 5 to 8. Now today, we start from question 9. Question 9 to 19 is the word problem question. Question 9. A bus can cover 62.5 km in 1 hour. How much distance can it cover in 18 hours? 1 hour how much distance cover? 62.5. 1 hour में 62.5 डिस्टेंस कवर करता है. देन हाउ मच डिस्टेंस कवर इन 18 आवर? 18 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? देन वी मल्टीप्लाई बाई 18. क्या करेंगे हम? 18 से मल्टीप्लाई करेंगे. देन बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द स्टेटमेंट ऑल्सो. हमें क्या करना है? स्टेटमेंट भी राइट करना है. क्लियर? नाउ क्वेश्चन 10. 1 tin of oil weight is 16.8 kg. What is the weight of 45 sustains? It means in this question again is the multiplication question, is the weight of 8 tin oil. 8 tin of oil, 1 tin oil के weight का oil का weight is given, how much given is 16.8. Then find out the weight of 45 sustains. 45 टिन्स का हमें वेट फाइंड करना है. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3C, क्वेश्चन नंबर 10. Weight of a tin of oil. Weight of a tin of oil equals to how much? 16.8 kg. Then weight of how much? 45. Weight of 45 tins. 45 tins of oil equals to 45 multiply by 16.8 kg. Start do the multiplication. Firstly, we make the column 168 multiply by 45. 168 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 168 मल्टीप्लाई बाय 45. 5 8 जा 40. वी राइट ओनली 0. कैरी इज 4. 5 6 जा 30 एंड 4 34. कैरी इज 3. 5 1 जा 5 एंड 3 8. 5 8 जा 40. वी राइट हियर 0. कैरी इज 4. 5 6 जा 30 and 4 34. Carry is 3. 5 1 ja 5 and 3 8. Here we put the cross. Again 4 8 ja 32. We write 2. Carry is 3. 4 6 ja 24 and 3 27. We write 7. Carry is 2. 4 1 ja 4 and 2 6. 4 8 ja 32. We write 2. Carry is 3. 4 6 are 24 and 3 27. 4 8 are 32. We write 2. Carry is 3. 4 6 are 24 and 3 27. Carry is 2. 4 1 are 4 and 2 6. Clear? Now 0 6 8 7 15. Carry is 1 6 1 7. Clear? Now because 168 into 45, otherwise 45 into 168 equals to 7560. Clear? Then 45 into 16.8. 45 into 16.8. डेसिमल 1 प्लेस पे था तो हम वी ऑल्सो पुट द डेसिमल
in the product is 756.0 डेसिमल वन प्लेस पे, डेसिमल हमने वन प्लेस पे ऑल्सो पुटअप कर दिया, तो वैल्यू क्या आ गई 756 kg. Clear? How much? 756 kg. Now move on the next question. Student, all are the multiplication question. Like question number, find the weight. Same question. A small bottle hold 0.845 kg of a sauce. How much sauce will be there in the 72 such bottles? Again is a multiplication question. Clear? Try to solve, but write the statement also. Like question 17. 1 meter of cloth cost is rupees 108.50. What is the cost of the 18.5 meter of this cloth? Clear? Then first of all we write the cost of 1 meter cloth. Cost of 1 meter cloth. Question number 17. Cost of 1 meter cloth. Cost of 1 meter cloth. Right? How much given? 1 meter cost is 108.5 rupee. 108.5. Clear? Then find out the cost of how much? Find the cost. What is the cost of 18.5 meter? Then cost of 18.5 meter cloth. 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट क्या है 108.5. देन 18.5 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट क्या होगी, इक्वल्स टू जाएगा 18.5 मल्टीप्लाई बाई 108.5. 18.5. क्वेश्चन नंबर 17 इज 108.5 multiply by 18.5. Start. Now the decimal multiplication I was explaining in the previous class also. First of all we do the simple multiplication, remove the decimal like 1085. इसको हम लिख सकते हैं 108.5. then when we remove the decimal like is 1085 multiplied by 185. किससे मल्टीप्लाई किया 185 से. नाउ 5 5 ज़ा 25 carries 2, 5 8 ज़ा 40 and 2 42 we write 2 carries 4, 5 0 ज़ा 0 and here is 4, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 carries 2, 5 8 ज़ा 40 and 2 42 we write 2 carries 4, 5 0 0 and here is 4, 5 1 ज़ा 5. Again put the cross. 8 5 ज़ा 40 carries 4, 8 8 ज़ा 64 and 4 68 carries 6, 8 0 ज़ा 0 and 6 6 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40 we put 0 carries 4, 8 8 ज़ा 64 and 4 68 we write 8 carries 6, 8 0 ज़ा 0 and 6 8 1 ज़ा 8. Again we put the cross. 1 5 ज़ा 5, 1 8 ज़ा 8, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 5 2 8 4 12, 12 and 5 17 carries 1, 5 1 6, 6 6 12, 12 and 8 20 carries 2, 8 2 10 carries 1, 1 1 2. Clear? Now again because 185 into 1085 equals to value is 1s 10s 100 1000 10,000 lakh.
2,725. 2,725. Then 18.5 into 108.5. Decimal one place, two place. Then in the product also we put the decimal. How many places? We write the decimal. How many places? In 2 places also. In 2,725 था, डेसिमल 2 प्लेस पे पुटअप कर दिया फ्रॉम बैक साइड से. क्लियर? तो ये वैल्यू क्या हो गई? 2007.25. 2007.25. क्लियर? Got it? Clear everyone? Now move on. The next topic is the division of decimals. Division of decimal. So now we follow the sum rules on dividing a decimal. Student, complete the other questions, follow the same process, write the statement also, do the multiply and complete question 9 to 19. Clear? Now we start the new topic, division of decimal. Dividing a decimals by 10, 100, 1000, etc. On dividing a decimal by 10, the decimal point is shifted to the left by 1 place. Clear? On dividing a decimal by 10, जब हम डेसिमल नंबर को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे किससे? 10 से डिवाइड करेंगे. सपोज 10 से डिवाइड करेंगे, द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड. जो डेसिमल पॉइंट क्या होगा? वो शिफ्ट हो जाएगा टू द लेफ्ट बाय द 1 प्लेस. लेफ्ट साइड में क्या होगा? 1 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा. अगेन ऑन डिवाइडिंग बाई 100, अगेन शिफ्टेड. हाउ मेनी प्लेसेस? 2 प्लेसेस. द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट बाय 2 places. And same process on dividing by 1000. On dividing a decimal by 1000, the decimal shifted how many places? 3 places. From which side? Left side. The decimal point is shifted to the left by 3 places and so on. It means suppose हम 10,000 से डिवाइड करेंगे तो कितने डेसिमल शिफ्ट हो जाएंगे? 4 प्लेस शिफ्ट हो जाएंगे. क्लियर? नाउ वी start the another topic, dividing a decimal by a whole number. When a decimal number divide a whole number, perform the division by considering divided. The division by the considering the divided a whole number. When it perform the division by the considering the divided a whole number. When the division of whole number part of the dividend is complete, put the decimal. Suppose हमारा dividend वाला whole part complete, whole number part of the dividend is complete, whole number part complete हो गया. Then after then put the decimal point in the question and proceed. decimal put up करेंगे and proceed with the division as the case of whole numbers. Clear? इसको हम example लेके आपको समझाते हैं. Now start the exercise that is based on the property and based on the division of the decimal. Start exercise 3D. Exercise 3D. Exercise 3D. Question first. 131.6 divided by 131.6 divided by 10. Clear? 131.6 divided by 10. 10 से डिवाइड करना है. क्लियर? तो नाउ स्टूडेंट 1 प्लेस हम क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड में. डेसिमल क्या करेंगे? हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे. तो डायरेक्ट हम इसका आंसर लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं 13 और यहाँ पे पॉइंट था 1 प्लेस और शिफ्ट कर दिए तो ये क्या हो गया? 1316 था. अब डेसिमल 1 प्लेस पे था, अगेन 1 प्लेस शिफ्ट कर दिए, 1 प्लेस ज़रा शिफ्ट कर दिए. क्लियर? तो ये क्या हो गया? डेसिमल हमारा 2 प्लेस पे आ गया. क्लियर? 13.5.